Hello everyone. I hope every one of you is doing very good. So it's around 30 days left for your main exam. And today I'm just going to discuss about how you are going to approach for biochemistry in the last 30 days. So without wasting much time, let's get started. So as you all can see on your screen, I have divided you all into three main categories. One is those who have started fresh after the postponement. Second are those who are studying since long, still not able to score. Third are those for whom the biochemistry is definitely a very strong subject. So let's discuss about those people for whom it's already a very strong subject. You don't have to do anything, just give more and more subject tests. Very important. Try to change the platforms. If you're giving it from Marrow, try to go for Cerebellum or any other platform like PrepLadder. Along with that, at least do weekly 100 questions of biochemistry. Now, for questions, I will be emphasizing on biochemistry as well as pathology and microbiology, because all of these three subjects are very important if you see NEET PG or you see INESET. So they can ask you n number of different varieties of questions from the same topic. So for that, you need to have the grip over the question. See, at last, it's all dependent, like how you are approaching to a question when you are sitting in that 3.5 hours of time interval. So it's better that you start solving more questions. In these 15 days, you have to focus more and more on the questions rather than the revision. And then after that, you can focus more on revision and less on questions. Now, prepare the way you are preparing. You are definitely doing very good and you will be doing very good. Now, talking about those who have started fresh after the postponement. So for them, you have to give a subject test or any of the PYQ based tests, and you will be able to score either greater than 75 or less than 75. If you are greater than 75, you are in a very safe zone. So what you are going to do, you are going to focus on most important aspects. Important aspects मतलब जो आना ही आना है. वाइटामिन आने हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस आनी है, अमाइनो एसिड आने हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीकली 50 से 75 या 100 क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग करने हैं, बिकॉज this is a volatile subject. I am emphasizing again to solve every week at least 50 questions of biochemistry, be it from any of the section. You have to do it because it forms a major chunk in NEET PG exams. Now, you have to focus more on amino acids, vitamins, carbs, and then you can go forward for molecular and rest of the things. Even if you're not able to complete molecular and rest of the things like the general enzymes and all, it's okay. You can just go through the RR notes or the RR videos very passively, or you can just go and solve the questions. Now, you have to watch and give ENDs. Please guys, it's for everyone. It's not only for this zone, for everyone. You should start seeing ENDs or TND from any platform. It doesn't matter. See, the main focus of END is they are telling you how you are going to approach towards a question, rather than just मेकिंग यू क्रैम. ओके, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है. नहीं, टेस्ट एंड डिस्कशन में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका तरीका देखो, वो इस क्वेश्चन पे कैसे पहुंच रहा है, आप उस क्वेश्चन पे वैसे क्यों नहीं पहुंच पाए. दैट शुड बी द मेन मोटो बिहाइंड END or TND. Okay, now you have to add on to your 20th notebook whatever extra thing you are getting. You have to add on, but see, there will be very different elaborated explanation for most of the questions. You don't have to go into details for everything. Please, you have to be more and more selective, more and more segregative कि यार ये क्वेश्चन लग रहा है, ये मुझे आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मैं करूंगा. For example, there's a very famous question, everyone will be knowing, why is liver not able to utilize the ketone bodies, however it is synthesizing it. So that should be known. ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो देन कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग है. दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर दिस कैटेगरी. नाउ, फॉर दोज हु आर स्कोरिंग लेस देन 75%, उनके लिए क्या करोगे? मेनली यू जस्ट गो थ्रू द इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू सॉल्व ऑल द पीवाईटीज. आई विल टेल यू वन रेट्रोग्रेड अप्रोच. आप सारे पीवाईटीज सॉल्व करो किसी भी प्लेटफॉर्म से. यू ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर पीवाईटीज. नाउ सेग्रीगेट कौन सा आपका वीकर टॉपिक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्गर टॉपिक है. अब जो वीकर टॉपिक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी का कार्बोहाइड्रेट का साइकिल्स वीक हो रहा है, so you have to solve the custom module from that selected topic. Okay, 25 question each day you can go. I'm not saying कि daily biochemistry पढ़ो, but daily इसको कम से कम 15 से 20 मिनट, नहीं तो 30 to 45 मिनट्स दे दो. 30 to 45 मिनट्स नहीं तो 15 to 20 मिनट्स दे सकते हो. This is an important subject. You have to know the biochemistry topics because see, आप
कहीं ना कहीं से सर्जरी, OBGN एंड द अदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को स्कोर अप कर सकते हो, बट इसके लिए इफ यू आर नॉट नोइंग द सब्जेक्ट यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन. दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ if you have never read the subject ever, so now for this what you are going to do, you are going to use first aid. It is very nice. You just can get online PDF from anywhere. Just read that. Most of the questions will be asked from that aspect only. या फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, आरआर देख लो, रैपिड रिवीजन देख लो किसी भी प्लेटफॉर्म से. उससे भी ज्यादा अगर वो भी आलस लग रहा है, so just go to BTR. Ma'am has totally concised it very beautifully. Okay, now for those who are studying since so long still not able to score, ठीक है. Now for these group of people I always say that यहाँ पे आपका knowledge खराब नहीं है. Here the main problem is in your way of answering a question. Okay, so how you are going to approach for that? So you have to segregate that the questions that you are doing wrong in a subject test, in a mini test, in whatever test you are doing, is it a new fact or is it a conceptual based question? If it is a new fact, you have to note it down. If you want to read it at that time, read it, वरना उसको store करो, last में जब revise कर रहे हो उसको एक बार देख लो. If it is concepts, I still feel that you have 10 days. आप 10 days में इन concepts को तगड़ा करो. Now, it's not like daily for 10 days you have to read biochemistry. Slowly, every day, swalpa, little, you can read this biochemistry. Okay. Now, have a grip over PYT. Very important for you people, especially PYTs पे grip रखना है. You should not be in a position कि आप कसाल्स नेकलेस को wrong कर दो, या फिर ऐसे जो simple questions आते हैं ना उनको wrong नहीं करना है. So you should have a grip over the PYTs. Okay. Accept and move forward. See, the most important thing, आपको पता है 16 questions आने हैं, ठीक है. उसमें से if you are able to score even 9 questions correct, I know it's not so good to tell this, but even if you are scoring 9 questions, it's good. एक ही सब्जेक्ट सब कुछ नहीं एम्फेसाइज करता, हर किसी के लिए कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट होता है. फॉर मी इट वाज ऑलवेज PSM, सो एवरीवन विल हैव वन वीक सब्जेक्ट. यू डोंट हैव टू वरी सो मच. हाँ, बट ये है कि if अगर सारे के सारे ही ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं है इंटरमीडिएट सब्जेक्ट से, देन आई फील दैट बायोकेमिस्ट्री को अपना थोड़ा सा इंटरमीडिएट सब्जेक्ट में रखो, क्योंकि it's not like it will अचानक से shift into the stronger subject. Being very practical, you have to know the concepts. ठीक है. एंड अभी 1 month है, बायोकेमिस्ट्री पे अपना दिमाग खराब मत करना. 15 दिन जितना है उसको ट्राई कर लो जितना हो पा रहा है, एंड देन आफ्टर दैट accept and move forward. At least go through amino acid and vitamins. That's what I wanted to tell you. Now, apart from that, how are you going to read the smart version of biochemistry? See, अगर मैं टॉपिक्स वाइज देखूं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्पेशली इन अमाइनो एसिड्स दे आर गोइंग टू आस्क यू मेटाबॉलिक डिजीजेस, द एंजाइम्स दैट आर डेफिशिएंट, अल्केप्टोन्यूरिया एंड वेरियस डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. फैक्चुअल क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग डायरेक्टली ग्वानिडीनियम रिंग किसमें होती है, देन इंडोल रिंग वाला कौन होता है, देन दे विल लिंक इट टू द सर्जरी क्वेश्चंस, कार्सिनोइड ट्यूमर्स पे क्वेश्चंस आ सकता है. ठीक है. देन ग्लाइसिन, मीथियोनिन, होमोसिस्टीन, फिनाइलएलानिन, these are the must read amino acids. Okay, especially I feel glycine is very important, very underrated and ignored most of the times. Now, after that, in vitamins, you should go and read at least vitamin B and all other vitamins related to vitamin B. ठीक है. Question आएगा. Methyl cobalamin, folic acid, pyridoxine, thiamine, these are very important vitamins. You are getting question on them. Okay, integrate with pathology and pharmacology as much as you can. परसों ही हमने बात करी थी in hypolipidemic drug, niacin is such an important drug also. It can be asked, okay, in any way from patho or from pharma, it can be asked. Do you know that excess of the vitamin E क्या कॉज कर सकता है? ट्राई टू कमेंट बिलो. ओके, सो विटामिन टेस्ट आर इंपॉर्टेंट, देन इंटीग्रेटेड विद PSM, स्पेशली द रिक्वायरमेंट्स, यू नो, यू विल फॉरगेट दिस. तो इसको कहीं बना लो एंड दैट लास्ट डे यू कैन गो एंड रीड इट. नाउ, अपार्ट फ्रॉम दैट, द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको देखने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, TCA साइकिल. देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, अभी भी नहीं समझ आ रहा है. सिंपल, खाना मुंह में जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, ग्लूकोज आगे जाके स्टोर ग्लाइकोजन में होगा. उसका क्या फेट है? अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो क्या होगा? इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली द साइकिल पार्ट. एंड देन फाइनली TCA से कैसे ATP बनती है, एवरीथिंग यू शुड नो बाय हार्ट. And metabolic diseases, the new treatment, glucose transporters, ECT, Krebs cycle, PDH enzyme, very important. बहुत टाइम हो गया नहीं आया है, क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. एंड आई एम टेलिंग यू, नीट PG में बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल होते हैं. इट्स अनलाइक एनी अदर सब्जेक्ट. ओके,
then lipid and miscellaneous things you can go for, and then you can go for the molecular aspects at last. And molecular भी बहुत simple basis में आएगा, they will not expect so much. ये एम्स में होता है जिसमें molecular ज़्यादा आता है, but please don't blame me अगर नीट पीजी का question pattern फिर से change हो जाए. But till now what I have experienced, I have seen, they will never ask you anything so deep into molecular, especially PhD level का, they will not ask. So the take home message for biochemistry is simple कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ट्राई टू बी वेरी सेलेक्टिव, वेरी प्रिसाइज कि यार ये क्वेश्चन मेरे को अपनी छोटी कॉपी में लिखना है या नहीं लिखना है. प्लीज डू नॉट हिट द एरो इन द एयर कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. डू नॉट थिंक दैट पूरा बायोकेमिस्ट्री यू कैन रीड. नो, इट्स नॉट अ प्रॉफ एग्जाम, इट्स नॉट योर फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम. Okay, so you have to be very selective. That is one home message that I want you to take for biochemistry. Okay, so keep studying. Soon I'm going to bring you the 15-day strategy for NEET PG. Okay, keep studying. Bye.